repeating. अब देखिए, अब दिखना चाहिए, अब आपको दिखना चाहिए, अब आपको दिखना चाहिए. Now, Anurag and all, please join the class. देखिए, क्वेश्चन आप E1, why are equatorial forest known as evergreen forest? यहाँ देखिए, give a few examples of trees found there. तो यहाँ से क्वेश्चन से हम लोग लिखेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज के बाद हम लोग 42 में जाएंगे. दिस एरिया रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. We have to give the two answers. We have to two हमारे आंसर के क्वेश्चन के. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, why are the equatorial forests are known as evergreen forest? Give a few examples of trees found there. So we have to write the equatorial forests are known as evergreen forest because, or go on page number 42 now. Go on page number 42 now, and there you will found that देखिए यहाँ पे, see it. See it, because this area receive heavy rainfall throughout the year and remain green throughout the year. Is it clear? Or the main trees found in these areas are ebony, rubber, mahogany, rosewood, etc. It is page number 42. Now children, come on, question number 2. What role do plants play in ecological
Yes, now children, what role do plants? Athar Kapil. Yes, I was disconnecting. कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आप हाथ नहीं उठाइए. Yes, now question number 2. What role do plants play? What role do E2? What role do plants play in ecological balance? Yes, yes लिखिए. Plants prepare. यहाँ देखिए. All of you see page number. This is the page number. Page number 41. Page number 41. देखिए. Plants prepare their own food with the help of plants prepare their own food and are यहाँ लिखेंगे plants prepare their own food. food के बाद लिखेंगे and are known as food factories. full stop करेंगे. Plants provide food for the animals to satisfy their basic needs. Plants prepare their own food and are known as food factories. Plants provide food for the animals to satisfy their basic needs. To satisfy their basic needs. Ecological balance में यही plants जो हैं, this role they play. Plants prepare their own food with the help of, with the help नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे plants prepare their own food and are known as food factories. Plants provide food for the animals to satisfy their basic needs. Is it clear? Answer is clear. Role क्या plant play करते हैं? Food provide करते हैं. Now अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगी तो वो हमसे अकेले बाद में फिर चैट करेंगे. हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. Distinguish between tropical and temperate grasslands. Distinguish between tropical and temperate grassland. तो पहले हम लोग ट्रॉपिकल को लिखेंगे. पहले हम लोग ट्रॉपिकल को लिखेंगे. इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 में आ जाइए ट्रॉपिकल के लिए. कम ऑन पेज नंबर 42 फॉर ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इट इज हियर. देखिए लिखा हुआ है. पहले हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखेंगे ऊपर में. उसके बाद लिखेंगे दे आर फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे. वी विल राइट द आंसर पॉइंट वाइज. First point, they are located between the equatorial forest and hot desert in both the hemisphere. This is the first point. बुक में अपने इसी तरह लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिए. First point, they are located between the equatorial forest and hot desert in both the hemisphere. This is the first point. Point 2. Point 2. These grasslands receive 100 centimeter about 100 centimeter rainfall. This is point 2. Point 3. Point 3. The grasses of this region are very rough, thick and tall. Example, compass in Brazil. Example, compass in, यहाँ पर लिखेंगे example, यहाँ example लिख देंगे और तब लिखेंगे compass in Brazil. अब नाउ फिर से देख लीजिए. फर्स्ट में लिखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे आपके बुक में यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट वाइज वी विल राइट द आंसर पॉइंट वाइज. Point 1 is they are located between the equatorial forest and hot deserts in both the hemisphere. Point 2, these grasslands receive about 100 centimeter rainfall. Point 3, the grasses of this region are very rough, thick and tall. Example, यहाँ पर example लिख लेंगे and then we will लिखेंगे compass in Brazil. Example लिखेंगे and then we will write compass in Brazil. Is it clear to all of you? Now अब उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड. कम ऑन, टेम्परेट ग्रासलैंड पे हम लोग आ जाएंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड इज हियर. उसके बाद जो है लिखेंगे ये दिस ग्रासलैंड्स आर पॉइंट 1. टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस ग्रास आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट. पॉइंट 1 हो गया. पॉइंट 2, दिस ग्रासलैंड्स रिसीव अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल. इसका थर्ड पॉइंट भी देंगे. दे समटाइम्स रिसीव स्नोफॉल आल्सो. फोर्थ पॉइंट, द ग्रासेस ऑफ दिस रीजन आर सॉफ्ट एंड
short and soft. Example, prairies in North America. Prairies in North America. एक ही एग्जाम्पल दे दीजिएगा. एग्जाम्पल, prairies in North America. इसका एक पॉइंट बढ़ गया है आप लोगों का. इस टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल से टेम्परेट में एक लाइन, एक पॉइंट बढ़ा हुआ है. टेम्परेट ग्रासलैंड का जैसे हम लोगों ने लिखा, फर्स्ट पॉइंट दिया, these grasslands are located in the temperate zone and in the interior parts of the continent. पेज नंबर इज 43 से इसका पॉइंट ले रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, these grasslands receive about 25 to 75 centimeters rainfall. Point 3, they sometimes receive snowfall also. Point 4, the grasses of this region are short and soft. Example, prairies in North America. Example, prairies in North America. Now अगेन फिर से देखिए, पहले हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लिखेंगे एंड वी विल राइट द आंसर पॉइंट वाइज. पॉइंट 1 इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, दे आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट्स इन बोथ द हेमिस्फीयर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट 2, दिस ग्रासलैंड रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. पॉइंट 3, द ग्रासेस ऑफ दिस रीजन आर वेरी रफ, thick and tall. Example, Pampas in Brazil. Example, Pampas in Brazil. Now it is time, temperate grassland. Temperate grassland का first point, these grasslands are located in the temperate zone and in the interior parts of the continent. Point 2, these grassland receive about 25 to 75 centimeter rainfall. Point 3, they sometimes, they का यहाँ पर grasses, grassland, they sometimes receive snowfall also. Point 4, the grasses of this region are short and soft. Example, prairies in North America. Example, prairies in North America. Now the answer is, अब आप जो है दोनों को कंपेयर करेंगे and then if you will write the answer, तो आपको लिखते लिखते ही आंसर समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन दोनों का समझ में आ जाएगा. और चिल्ड्रेन, आई वांट टू डू वन रिक्वेस्ट आप लोगों से. हमेशा क्लास ये लाइव होता है, क्वेश्चन आंसर लिखने में अगर कोई दिक्कत लगती होगी, ब्लैक बोर्ड अगर नहीं दिख रहा होगा सबसे सिंपली, या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो इसके लिए आप लोग कम से कम अपने इस लाइव क्लास का वीडियो जरूर देखिए. यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर. बिकॉज सब चिल्ड्रन, कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसको लिख कर पोस्ट कर दीजिए. लाइव वीडियो इसीलिए आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप लोग उसको एक बार जरूर देखिए. लेकिन वीडियो के व्यूअर्स बहुत कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप लोग वीडियो व्यू नहीं कर रहे हैं. व्यू द वीडियोज ऑल्सो. Repeating, E2, what role do plants play in ecological balance? इसके लिए है पेज नंबर 41 में जाएंगे. प्लांट्स प्रिपेयर, देखिए पेज नंबर 41 में यहाँ देख लीजिए, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. एंड फूड के बाद यहाँ पर एंड लगाएंगे, एंड फिर इसके नीचे वाले, जस्ट नीचे वाले लाइन में आ जाएंगे, एंड आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. इकोलॉजिकल बैलेंस में एनिमल को फूड देते हैं. इज इट क्लियर? दिस इज द रोल, दिस रोल दे प्ले इन द इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में रखते हैं. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स. देखिए यहाँ क्वेश्चन है E4, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स. नाउ कम डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स. द क्वेश्चन इज, चिल्ड्रेन नाउ जस्ट सी, डेजर्ट्स में दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए पेज नंबर है 43, डेजर्ट्स. हियर आर डेजर्ट्स. यहाँ देखिए जहां मेरा पेन है वहां डेजर्ट्स लिखा हुआ है. यहाँ हॉट डेजर्ट है और नीचे ही कोल्ड डेजर्ट है. तब अब आप लोग पहले हॉट डेजर्ट लिखेंगे, ये भी डिफरेंशिएट ही करना है पॉइंट वाइज. इसका भी हम लोग आंसर देंगे. वी विल ऑल्सो आंसर इट पॉइंट वाइज ही इसका आंसर देंगे. These are mostly located on the western margin of point 1. Hot desert. These are mostly located on the western margin of the continent. Continent. या continent के बाद where नहीं, the point 2 दे देंगे. The temperature remains very high throughout the year. अब टेम्परेचर का हो गया, पहले ये कहाँ है ये बता दिया गया, तो कहाँ है, मोस्टली लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. यहाँ है देख लीजिए.
टेम्परेचर का 0.2 हो जाएगा. द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर. क्लियर. एग्जाम्पल सहारा, थार, सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, द थार डेजर्ट इन इंडिया एटसेट्रा. एग्जाम्पल में दे देंगे. ये इस 2.2 के साथ ही दे देंगे. 0.2 के साथ ही दे देंगे. 0.1 हो जाएगा. हॉट डेजर्ट का 0.1 हो जाएगा. These are mostly located on the western margin of the continent. They are 0.2 हो गया. 0.3 the temperature remains through very high throughout the year. Example the Sahara desert in Africa, the Thar desert in India. या ये हो गया. और उसके बाद जो है वेजिटेशन का जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, कैक्टस, श्रब्स एंड बुशेस आर द कॉमन vegetation in this area. Cactus, shrubs and bushes are the common vegetation in this area. Now उसके नीचे ही cold desert शुरू कर देंगे. Cold desert का the cold desert इसका 0.1. The cold deserts are mostly found around the polar region. 0.2 the temperature remains below freezing point for the major part of the year. The temperature remains below freezing point for the major part of the year. Example यहीं पे दे देंगे. Example northern part of Siberia. Example northern part of Siberia. Example northern part of Siberia. हो गया clear. The common 0.3 the common vegetation is comprised of mosses and lichens etc. Mosses and lichens etc. Now फिर से देखिए again I am going to repeat the question answer. The differentiate between the hot and cold desert. This is question number 4 children. The question number 4 का देखिए. The hot desert दे देंगे पहले. फर्स्ट और हम लोग hot desert देंगे. उसके बाद उसका point we will write the point. तो 0.1 these are mostly located on the western margin of the continent. Is it clear? 0.2 the temperature remains very high throughout the year. Example the Sahara desert in Africa, the Thar desert in India. Is it clear? Third में cactus, shrubs and bushes are the common vegetation of this area. Cactus, shrubs and bushes are the common vegetation of this area. पेज नंबर है 43. उसके बाद हम लोग फिर कोल्ड डेजर्ट को लेंगे. यहाँ देखिए कोल्ड डेजर्ट 0.1 इसको भी पॉइंट वाइज देंगे. The cold deserts are mostly found around the polar regions. 0.2 temperature remains below freezing point for the major part of the year. Example northern part of Siberia. Example नीचे से ले रहे हैं. Northern part of the Siberia. A third point the common vegetation is comprised of mosses, lichens etc. The common vegetation is comprised of mosses, lichens etc. Is it clear to all? Now children, next is our next question. What are the various problems related to the ecological imbalance? What steps should we take to solve them? अब कहता है what are, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए. What are the various problem related to the ecological imbalance? अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हो रहा है उसमें क्या क्या वेरियस प्रॉब्लम है उससे. What steps should we take to solve them? अब उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए. देखिए इसको हम लोग व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. यस आई विल रिपीट कर देंगे, जरूर कर देंगे. ई का पूरा क्वेश्चन हम रिपीट कर देंगे. व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. इकोलॉजिकल से क्या क्या, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा. द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आर द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ecological imbalance are the various problems related to the ecological imbalance are. क्वेश्चन से लिख लेंगे, उसके बाद पॉइंट इसको देंगे. फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वन, द
areas under the forest are fast decreasing. देख लीजिए, the areas under the forest are fast decreasing. पेज नंबर 40 में दिए गए हैं. देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द एरियाज अंडर, पेज नंबर 44, द एरियाज अंडर फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग. पॉइंट टू इन द, इसी का पॉइंट 2, यहाँ देखिए पॉइंट 2, in the wildlife community, a few species like tiger, lion, etc. are already facing the danger of extinction. This is point 2. Point 2. Point 3, alarmingly, and there is a considerable rise in the global temperature. Point 4. Point 4. A few glaciers have all started melting in the polar ice caps. These are the problems. What are the, देखिए, there are two parts of this question. What are the various problems related to the ecological imbalance को करने, क्या क्या प्रॉब्लम उससे रिलेट करें. अब what steps should we take to solve them. अब कहता है फिर इसका एक दूसरा ये क्या है, हमको क्या स्टेप उसको सॉल्व करने के लिए लेना चाहिए. तो हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर को प्रिपेयरिंग. द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आर करके पॉइंट 1 देंगे. The areas under the forest are fast decreasing. This is the point 1. The areas, page number 44 देखिए, यहाँ मेरे human impact on the ecosystem. The areas under the forest are fast decreasing. Point 2. The wildlife community. In the wildlife community, a few species like tiger, lion, etc. are already facing the danger of extinction. Point 3. The pollution level in different countries is rising alarmingly, and there is considerable rise in the global temperature. Point 4. Few glaciers have also started melting in the polar cap. These are the problems. अब हमको क्या करना है कि हम उसको क्या क्या अपने आप को करना है. तो अब paragraph change करके सब आंसर करो. In order to maintain the ecological balance, afforestation should be taken on a large scale. In order to maintain the ecological balance, afforestation should be taken on a large scale. Hunting of animals should be strictly banned. For preservation, उसके बाद लाइन देखिए. For the preservation of different animal species, the government बार आता है पैराग्राफ लीजिएगा. इन ecology on a large scale, answer is page number 45. Hunting of animals should be banned
the preservation of animal species, the government has set up wildlife sanctuaries, national parks, and biosphere reserves. These are the measures. देखा all of you please see it. Question number 5 को हम repeat कर रहे हैं. The various problems related to the ecological imbalance are various problems related to the ecological imbalance are. पेज नंबर चले जाएंगे 44 में पॉइंट वाइज आंसर देंगे. पॉइंट 1 the decreasing point three is point two in the wildlife community. A few species like tiger, lion, etc. has always the danger of extinction. Point three, the pollution level in different countries is rising alarmingly, and there is a considerable rise in the global temperature. Point four, a few have already started in the polar ice cap. Now, अब उसके बाद जो है देंगे last point. In order to maintain ecological balance, afforestation should be taken up on a large scale. Point two, hunting of animals should be strictly banned. Point three, for the if you have any problem, you can talk it now. Write this question, write the question in your geography copy. Yes, in the step class, when you to draw the diagram, yes,
Write E of list. Write E of list in your geography copy. Any वगैरह प्रॉब्लम है तो वो हमको बता सकता है, वो हमको बता सकता है. If you want to with me after